and welcome to all of you to day number 3 of the summer camp 2024 titled The Summer Fun Fest. This is the first session of day 3, and in this session we'll learn some interesting tricks related to calculation, right? So let us proceed. So the first trick is from the Vedic mathematics. It is related to the multiplication of two-digit numbers in a very interesting manner. We'll learn that. See, the first question says multiply 32 with 38. Now I can tell the answer orally in 3 seconds, maximum 3 seconds. The correct answer will be 1216. Now you will say, sir आप रट्टा मार के आए हैं इसलिए इतने जल्दी आंसर बता दिए, बट दिस इज नॉट द केस. मैथ में रट्टा मारना बहुत बड़ा पाप होता है. इसके पीछे एक ट्रिक है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि आप भी 2-3 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं ओरली, राइट. नाउ द ट्रिक इज यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिजिट्स इन द वंस प्लेस. वंस प्लेस में यहाँ पे कौन कौन है? 1 is 2, second is 8. सो मल्टीप्लाई देम. 8 2 is 16. एंड जो नंबर है 10 प्लेस में उसका नेक्स्ट नंबर लेके, उसका सक्सेसर लेके उसको मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद कौन आता है? 4. 3 4 जा 12. सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. यहाँ पे क्या होगा? यूनिट प्लेस में कौन है? 7 and 3. 7 3 जा 21. हु इज देयर इन द टेंस प्लेस? 6. 6 plus 1 is 7. 7 6 जा 42. इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर यू कैन सॉल्व दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बट लेट मी टेल यू, दिस ट्रिक इज नॉट यूनिवर्सल. सब 2-digit नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है. कंडीशन इज देयर. व्हाट इज दैट कंडीशन? द कंडीशन इज आपके यूनिट प्लेस में दो डिजिट्स है, उनका सम होना चाहिए 10, एंड आपके टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो सेम होना चाहिए, तभी इस ट्रिक को हम कर सकते हैं, राइट. इस ट्रिक को हम अप्लाई कर सकते हैं. So let us check whether this trick is applicable to this question or not. Now focus on the unit place. This is the ones place. 9 plus 1 is 10. In the tens place there is 7 and 7. So this trick can be applied. Now multiply the 9 with the number 1. 9 ones are 9, but I need 2 digits, so I will write 0 9. Right? Again 7 plus 1 is 8. 8 7 are 56. The correct answer is 5 6 0 and 9. Next question, 94 into 96. First we have to check whether we can apply this trick or not. 6 plus 4 is 10 and 9 with 9 in the tens place. So this trick can be applied here, right? So 6 4 ja 24. 9 plus 1 is 10. 10 into 9 90. 9024 is the right answer. So in a fraction of a second you can solve it, right? But remember the term and conditions. Okay, what is the term and condition? The sum of the digits in the ones place must be 10, and in the tens place there must be same numbers, same digits, right? So let's proceed further. We have next question. See, the question is 99 into 91. First check whether we can apply this trick or not. Ones place 9 and 1. 9 ones are 9. So I'll write 0 9. Tens place 9 and 9. The successor of 9 is 10. 10 9 is 90. 9009 is the right answer. Let's proceed for the further. Check it whether we can apply it or not. 84 into 82. Unit place 4 and 2. But 4 plus 2 is 6. This cannot be applied here. Why? Because our condition is the sum of the digits placed in the ones place must be 10. So यहाँ पे तो 10 नहीं हो रहा, so this trick cannot be applied here. So trick number 1 is clear to everyone. I hope it is clear. Let's see some of the applications of trick number 1. First question is find the square of 65. Square means we know that we have to multiply 65 with 65, right? So let's check whether we can apply this trick or not. Unit place 5 and 5. 5 plus 5 is 10. And in the 10th place there is 6 and 6. So this trick can be applied. 5 5 ja 25. 6 plus 1 7. 7 6 are 42. 4 2 to 5 is the right answer. You can solve in a fraction of a second, right? Same way. 95. Square of 95 is 95 into 95. Unit place 5 plus 5 10.
tens place 9 and 9. So this trick can be applied. 5 5 is 25, 9 plus 1 10, 10 is 90, 9025 is the right answer. Okay, so this was trick number 1. Now let's proceed to trick number 2. This trick number 2 is again related to the Vedic mathematics, and in this trick we have a slight change in the position of numbers. In the previous trick, the tens place were same and the sum of the digits in the ones place were 10. But in this case, the ones place are same. Here you can see 2 and 2 in the ones position, 4 and 6. The sum of the digits in the tens position is 10. So what is the trick here? Multiply the unit places. 2 into 2, 4. I will write 0, 4. Multiply the tens positions. 4 6 jar 24. Add these two, the lower one. Add these two. 6 4 jar 24 plus 2, 26. The correct answer is 2604. I hope you got the trick. You have to multiply the digits in the ones place, then you have to multiply the digits in the tenth place and add another digit, okay, which is there in the right position. Okay, the same trick let us apply here. First check whether you can apply this trick or not. Unit place same, 5 and 5, right? Tens place 7 plus 3 10. So this trick can be applied. Trick number 2 can be applied here. Let us apply that. 5 into 5 25, 7 into 3 21, 21 plus 5 26, 2625 is the right answer. Okay, let's proceed further. Again 88 into 28. First check, unit place is same, tens place 8 plus 2 10. Clear? So this trick can be applied here. 8 8 are 64, right? 8 plus 8 2 are 16, 16 plus 8 24, 2 4 6 4 is the right answer. Next number 77 into 37. Ones place same, tens place sum is 10. So trick number 2 can be applied here. So 7 7 are 49, 7 3 are 21, 21 plus 7 28, 2849 is the right answer. So I hope you have gone through it and it is understood. Now let's proceed further. Trick number 3. Trick number 3 is related to the counting of rectangles. So we have solved this type of questions in our chapters of previous classes like fun with patterns, and in math olympiads these type of questions comes under the reasoning portion, and it is quite obvious to face this type of questions in our Olympiad exams, right? In each Olympiad exam, the question asks these type of questions. The paper asks these type of questions multiple times, like find the number of rectangles, find the number of squares, find the number of triangles, etc. So traditionally, what is done? We count them individually. Let us see. First, let us solve it in the traditional method. This is rectangle number 1. This is rectangle number 2, the smaller one, and then combined number 3. Then in the lower portion there will be another 3. Okay. Then vertically this is 4, this is 5, another 2, and finally the whole rectangle, another 1. So 3 plus 3 6, 6 plus 3 9 rectangles are there. Now I will tell you a trick. See, this traditional method is quite time consuming, and क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और भी ज़्यादा दे दिए, ठीक है, तो उस टाइम पे हम फंस जाएंगे ट्रेडिशनल मेथड में, तो हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं. एंड और ट्रिक इज़, आपको क्या करना है कि जो स्मॉलर रेक्टेंगल्स हैं उसको नंबर कर देना चाहिए. सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. ओके. Now add the rows and columns individually. First we have named them individually on the basis of their rows and columns, and then add them individually on the basis of their rows and columns. हम नंबरिंग पहले कर दिए 1 2, लेकिन नीचे भी 1 2, तो ऐड करते हैं. 1 plus 2 is 3, 1 plus 2 is 3. Now 3 into 3 is 9. ये है ट्रिक. बहुत ही आसानी से हमारा काम हो गया. तो इसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन में भी. सी,
तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हम पहले नंबर करेंगे, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3. अगेन रो वाइज देखेंगे तो 1 and 2. ओके, देन विल ऐड 1 + 2 is 3, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6. Okay, so 6 into 3, 6 3 is 18. So there are 18 rectangles. Okay, now another type of question. See, we'll follow the same trick. How many rows are there, how many columns are there? So number them. This is 1, column number 1, column number 2, column number 3, row number 1, row number 2, row number 3, row number 4. Add them. Add the rows and columns individually. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10. Right, this is 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10. 10 into 6, it is 60. So the correct answer is 60. तो आप अगर आप एक एक करके सारे गिनने की कोशिश करेंगे 60 तक जाते जाते आपका सारा टाइम एग्ज़ाम में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से इसको ख़त्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड। सी, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। इसमें क्या है कि एक ही रो है, रो नीचे नहीं है, मगर कॉलम हमें 3 दिख रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हमें ज़रूरत नहीं है आगे मल्टीप्लाई करने का, हम बस नंबरिंग कर देते हैं 1 2 and 3, इसको ऐड कर देते हैं 1 + 2 3, 3 + 3 6. ओके, सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व इट, राइट, अंडरस्टूड। तो हमें पता चल गया कि कैसे ऐसे जो काउंटिंग रेक्टेंगल्स है उसको कैसे किया जाए। आगे चलते हैं। आगे हमारा ट्रिक है रिलेटेड टू द काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। ट्रायंगल काउंटिंग का भी क्वेश्चन आता है ओलंपियाड में, तो हम उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सॉल्व इट ट्रेडिशनली। सी, दिस इज ट्रायंगल नंबर 1, स्मॉलर वन, this is triangle number 2, another smaller triangle, and finally the whole one that is triangle number 3. So there are 3 triangles, right? Now what is the trick? अगर ऐसा बड़ा बड़ा पैटर्न आ जाए तो क्या करेंगे, बिना ट्रिक जाने तो हम फंस जाएंगे ना, तो हमें ट्रिक जानना पड़ेगा। सी, हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर ट्रायंगल्स हैं, जो सबसे छोटे वाले हैं, उनको नंबर करेंगे। बड़ा ट्रायंगल को भूल जाएंगे, बस जो छोटे छोटे हैं उनको नंबर कर देंगे। दिस इज छोटा ट्रायंगल नंबर 1, this is छोटा triangle number 2, then we will add them, right? 1 + 2 is 3. So there are total 3 triangles in this figure. Okay, I hope it is understood. Now इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे। See, यहाँ पे हम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। So how many triangles are there? Smaller triangles, I'm talking about smaller triangles. Forget about the bigger one or the middle size one. Smaller triangle के ऊपर फोकस करेंगे। This is number 1, this is number 2, this is number 3. बस ऐड कर देंगे। ट्रिक बहुत ज़्यादा सिंपल है। ट्रेडिशनली एक एक करके उनका नेमिंग करके ABC ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, या फिर बड़ा पैटर्न हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे। तो ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 ट्रायंगल्स आते हैं। ओके, वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट इन 2 seconds, राइट। ट्रेडिशनली करेंगे तो आपको 2 मिनट से भी ज़्यादा जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम पैटर्न but a little bit more complicated. Another smaller triangle is there, but the process is same. First number them. This is number 1, this is number 2, this is number 3, and this is number 4. Then add them. 1 + 2 + 3 + 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10. So there are 10 triangles in total in this figure. Okay, so it is as easy as possible. Now we have the final trick over here. Now see, this trick is related to the mixed numbers, the sum of mixed numbers. Now traditionally, how do we solve this? First we convert these mixed numbers into improper ones, like 5 5s are 25, 25 + 4 29/5, again 4 5s are 20, 20 + 2 is 22/5, and then they are like fractions because denominator is same. 29 + 22, that is 9 + 2 11, 2 + 2 4 + 1 5, 51/5. Now this is the answer is in the improper pattern. We will convert it into mixed one,
which will be 10 whole 1 by 5. Now it takes time, okay? In Olympiads we need fast calculation. How will you solve that? So the technique says you will focus on the whole numbers. You will add the whole numbers separately and you will add the fractions separately, okay? So focus on the whole numbers. Whole numbers are 5 plus 4. You can easily add them instantly. 5 plus 4, 9. And the fractions are 4 by 5 plus 2 by 5. Now 4 plus 2 is 6 because they are like fractions. 6 by 5. And 9 plus 1 whole 1 by 5 is 10 whole 1 by 5. Okay? Now let us apply this technique in the second question. Second question, instantly 9 plus 8, 17, right? Then 6 by 7 plus 1 by 7. Now they are like fractions. 7 is the denominator. 6 plus 1 is 7. And this is 17. 7 by 7 is nothing but 1. 17 plus 1 is 18. Very easy. If you will follow the traditional pattern, you have to convert it into improper one, then take the like fraction case, okay? So it takes time. This technique will reduce your time by at least 50-60%. Clear? But there is a condition for here. The condition is the fraction part. The fraction part must be like one. Okay? अगर अनलाइक फ्रैक्शन होगा मिक्स नंबर में तो ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ज़्यादा टाइम लगेगा. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन को कंप्लीट करते हैं. आवर नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ रामायण थ्रू पपेट्री. आई होप सब उसको एंजॉय करेंगे इक्वली. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.